Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivaradhari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jagannath Baladeva Subhadra Maya Sudarshana Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jai Subhadramaya Jayo Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jai Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jai Nitai Gaurango Hari Bol 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन गिरिवर धारी जय राधा माधवम जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई गौरांगो हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So, we discussed in our previous session about the different aspects of Yajna. Lord Krishna, in Lord Brahma, in this chapter, he is talking about how when he was born from the navel of Lord Vishnu, he did not know anything. He only knew the Lord. And we discussed that how it's very important to engage in yajna for satisfaction of the Lord. So Lord Brahma, we discussed Lord Brahma talking about what are the requirements of a yajna. Because as we know, this material world, everything belongs to Krishna. And everything has to be used in the service of Krishna. Because everything is emanating from the energy of the Lord. So everything has to be used in the service of the Lord, and that is called yajna. And Lord Brahma is talking about different aspects of a yajna, what are the different requirements of a yajna, the components of the yajna. Different ingredients we require, and most important ingredient of a yajna is qualified brahmanas. Because they will be chanting the mantras, they will be chanting the Vedic hymns. But then nowadays you don't find them. It's very difficult to find qualified brahmanas who would chant everything perfectly. And that is why we discussed that in this age also we need to, because without yajna you cannot satisfy the Lord. You cannot satisfy Krishna, the Supreme. So that is why in this age, the Lord is satisfied simply by chanting his holy name. That is the best yajna, that is the highest yajna, highest sacrifice which can be performed in this age of Kali Yuga, in this degraded age of Kali Yuga. Now today we'll start with text 26, shloka number 26.
नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेवः एव च नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च. Translation: other necessities include invoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense in accordance with the particular scripture for specific purposes by specific processes. So Lord Brahma is talking about different kinds of yajna, and he's talking about how a yajna, how a sacrifice has to be, can become successful. So he's saying here that namadhyayani mantrascha. Namadhyayani, we have to chant the names of Krishna, and also sometimes some yajnas, some sacrifices are performed to please some demigods. Dakshinascha vratani cha. So you have to chant some mantras. You have to dakshina. Dakshina means to do charity, to give. So dakshina or charity has to be given to the brahmanas, to the Vaishnavas, to the devotees, to the sannyasis, and vratanicha, and we have to undergo some vows of celibacy. Devatanukramah kalpaha, and different demigods' names have to be chanted, and sankalpastantramevaha evacha, and different processes are involved. Right. So different kinds of yajnas are there. Although the purpose of all yajna, what is the purpose of all yajna? There is a very beautiful shloka in the Bhagavad Gita which talks about what is the purpose of every yajna. What is the meaning of a yajna? Let me show you that shloka in the Bhagavad Gita, that what is the meaning of a yajna. You can see on your screen the shloka. So in the Bhagavad Gita, in the last shloka of the 5th chapter, the last shloka of the 5th chapter, 29th shloka of the 5th chapter, Lord Krishna talks about what is the purpose of every yajna. You see on your screen. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva shanti mrichati. What is Lord Krishna saying here? That Bhoktaram Yajna Tapasam, I am the Bhokta, I am the enjoyer of Yajna Tapasam, of all the Yajnas and of all the Tapasam. Tapasam means Tapasya. I am the Bhokta, I am the enjoyer, and I am the beneficiary of all the Yajnas and of all the Tapasam. Tapasam means austerities. So all the yajnas are meant to please Krishna. That is why in the Vedic scripture there is a verse which says, Yajno vai Vishnuhu. It says Yajno vai Vishnuhu. It says that the meaning of yajna is Vishnu, to please Vishnu. All yajnas are performed for the pleasure of Lord Vishnu. So
These different processes are mentioned in different scriptures about performing sacrifices, performing yajna. And this is very important. So what happens is when you perform a yajna, when you perform a sacrifice, and some sacrifices are there which are meant for pleasing other demigods also. But even in that yajna, when you are trying to please other demigod, the prime beneficiary is Vishnu. So what happens is you please Lord Vishnu, and then the remnant of that yajna is given to demigods so that they are also satisfied. They cannot be satisfied independently. They can be satisfied only when Lord Vishnu is satisfied, right? So that is the system of yajna. So that is why yajna is very important. Sacrifices are very important. The purpose of sacrifice is Yasmin Tushte Jagat Tushte. To satisfy Krishna, because if he is satisfied, whole world is satisfied. Right? Now this cannot be understood by gross people. Those who are engaged in gross material world or in gross material sense gratification, people cannot understand. This gross material knowledge which we gain, physics, chemistry, biology, commerce, mathematics, all this material knowledge that we gain, this can only increase our material needs, that's all. This only increases our material need, and it pushes the civilization in a completely wrong direction. You see, what is the current civilization? The current civilization which we are seeing, all of us are a part of it. What is the purpose? The purpose is to simply do sense gratification. Is there any other purpose of current civilization? My Guru Maharaj used to say that this is animalistic civilization. Is there any provision made in this current civilization to satisfy God, to satisfy Krishna? So the whole purpose of the society, the whole purpose of the civilization gets destroyed by this gross material science. That is why my Guru Maharaj used to say that this is soul-killing civilization. This civilization is simply producing animals. That is the difference between human beings and animals. The only difference between human beings and animals is what? That human beings have got little higher intelligence, because by this intelligence they can understand dharma. Ahar nidra bhay maitunam cha samanyametam pashubhir naranam dharmo hi tesham adhiko vishesho. Dharma is the only thing which separates human from animals. And what is dharma? Dharma means satisfaction of Krishna. Any activity we do in this world for the mission of the Lord, that is called dharma. Now, how many people in this world are engaged in mission of Krishna? How many people? Very less. So that is why this whole civilization is heading towards degradation, complete fall down. An atom bomb will drop from the sky and whole civilization is gone. Self-destructive civilization it is called. Self-destructive. We have created atom bombs to destroy each other. Countries are quarreling continuously. Constantly you will see quarrel, hypocrisy, fighting going on between countries. Why? Because of ego. So one person is jealous of the other person because of ego, false ego. This creates enmity between two families. Then this jealousy extends further into societies.
Then this jealousy increases further into two sects. They are fighting. And it extends further into two countries, two states fighting with each other. Bigger egos. So, self-destructive civilization. To kill each other, we have created big ammunitions. It's a very dangerous civilization. Very dangerous. So that is why Chaitanya Mahaprabhu appeared in this age of Kali Yuga. You see, what is the purpose of Lord Krishna appearing in this material world? What is the purpose of Lord Krishna's appearance? Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, you can see on your screen. What is the purpose of Lord Krishna's appearance? Very famous shloka of the Bhagavad Gita. You all can see on your screen. You see, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Sambhavami yuge yuge. For what purpose? Sambhavami yuge yuge means I appear in every yuga, in every millennium. Now what is the current yuga going on? Kali Yuga. Before this, which was the yuga? Dwapar Yuga. So Krishna appeared in Dwapar Yuga. That means, according to this shloka, that he will appear in Kali Yuga also. Now, what is the purpose of Lord Krishna's appearance? You see on your screen. Dharma samsthapanarthaya. To re-establish dharma. Lord Krishna appears to re-establish dharma. Now, what is the dharma of this age of Kali Yuga? The dharma for this age of Kali Yuga is chanting of the holy names. Harinam. So, Krishna appears in Kali Yuga. That is why in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, the Kali Yuga incarnation of the Lord is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Yuga Dharma of this age of Kali Yuga is what? Chanting of the holy names. And to re-establish Dharma, who has to come? Krishna only has to come. So Krishna appears in this age of Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya has given the Dharma of this age of Kali Yuga, which is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everyone in this world can take advantage of this process of chanting and glorifying Krishna, and they can make their life successful. How life becomes successful? By pleasing Yasmin Tushte Jagat Tushte. By pleasing Krishna, by satisfying Krishna. And the highest satisfaction which human being can give to Krishna in this age of Kali Yuga is by chanting the holy names of Krishna. Because other yagyas are impossible to perform in this age of Kali Yuga. The only yagya, the only sacrifice which we can perform is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now text 27, shloka number 27. Gatayo matayaschaiva prayaschittam samarpanam purushavaya vairete sambhara sambhrita maya. Gatayo matayaschaiva prayaschittam samarpanam purushavaya vairete sambhara sambhrita maya. Translation. Thus I had to arrange all the necessary ingredients and paraphernalia of the sacrifice
from the personal bodily parts of the personality of Godhead. By invocation of the demigod's names, the ultimate goal Vishnu was gradually attained, and thus compensation and ultimate offering was complete. So now you see, what is Lord Krishna saying here? So he is saying that Gatayo Matayaschaiva Prayaschittam Samarpanam. So every offering was made to the Lord, and Prayaschittam Samarpanam means the ultimate offering was also made to the Lord. Purusha Vayavairete. Because every offering was made from the body of the Lord only. Sambhara Sambritamaya. That means all the ingredients were made from the body of the Lord. So as we discussed in the previous session, an example that those people who worship Mother Ganges, they take water from the Mother of Ganges only to worship Mother Ganges. Similarly, all the ingredients of sacrifice are also derived from the bodily, or you can say the energy of Lord Vishnu only. So, because Brahma Jyoti is the source of this material creation, we have discussed in the previous sessions that Krishna is the source of Brahma Jyoti. The effulgent rays of Lord Krishna is called Brahma Jyoti. And then Brahma Jyoti is the cause of material sky. And from material sky comes material air. Then from air comes fire. And from fire comes water. And from water comes earth. And these five constitute our body. And all these material things, what we see, are made up of these five elements. So everything is ultimately because of Krishna, Narayan. And so everything is meant for pleasing Lord Krishna or Narayan. And that is how you are permitted entrance into the kingdom of Lord Krishna. If we want to go back to Krishna, this is the process which Lord Brahma is mentioning here, the process of yajna, the process of sacrifice. And as we discussed, the highest sacrifice in this age of Kali Yuga is chanting of the holy names of Krishna. That is the only way we can go back to Krishna in this age of Kali Yuga. Now text 28, Shloka number 28. Iti sambhrita sambharaha purushavaya vairaham tameva purusham yagyam tena vayajam ishwaram. Iti sambhrita sambharaha purushavaya vairaham tameva purusham yagyam tena vayajam ishwaram. Translation. Thus I created the ingredients and paraphernalia for offering sacrifice out of the parts and parcels of the body of the Supreme Lord, the enjoyer of the sacrifice, and I performed the sacrifice to satisfy the Lord. You see, so what is Lord Brahma saying here? That in this way, I created the ingredients to satisfy Krishna. Iti sambhrita sambharaha. I created everything Purushavaya Vairaham, from the body of Purusha. From Purush means Lord Vishnu. So from the body of Supreme Lord Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Aham Tameva Purusham Yagyam. And Purush Yagya. You see, Purusham Yagyam means the enjoyer of all sacrifices. Teneva Yajam Ishwaram. Because everything was performed for his pleasure. For the pleasure of Purusha, for the pleasure of Supreme Lord Vishnu. And original Vishnu is Narayan, and original Narayan is Krishna. So ultimately everything is meant for the pleasure of Krishna.
So you see, what is Lord Brahma engaged in? What is Lord Brahma engaged in? Lord Brahma is engaged in satisfying Krishna. He is not engaged in satisfying people of this world. Nowadays, that is the mentality of people, no? Philanthropy, to please others, to please human beings. But Lord Brahma does not want to please human beings. He could have said, no, that I perform sacrifice by pleasing other human beings. But no, he does not want to please anyone. He is the creator of this universe, Lord Brahma, isn't it? He is the secondary creator of this universe. But is he trying to please others? No. He could have tried to please others, no? Like nowadays we see politicians, businessmen, and so many people. They are trying to satisfy human beings. Daridra Narayan. Try to serve the poor people. Try to help humanity, humanitarian work. But is Lord Brahma engaged in humanitarian work? No. Because that is not the solution to make this world a better place to live. No. That is not the solution in this world for anything. The only solution in this world is to satisfy Krishna. Because this world is originated. This world has originated from him. So only he can make this world a better place to live. If he is satisfied, Yasmin Tushte, Jagat Tushte, whole world will become beautiful place to live. So we know the problem. We know the problem. World is suffering. We see calamities every day. Human beings are fighting. There is shortage of everything. Although there is no shortage, but they think that there is shortage. Solution is one. What is that? Yasmin Tushte, Jagat Tushte. Solution is one. Satisfaction of Krishna. That's what Lord Brahma is doing here. You see? That's what we have been discussing, no? Is Lord Brahma trying to satisfy demigods? No. Is Lord Brahma trying to satisfy human beings? No. He is trying to satisfy whom? He is performing yajna to satisfy whom? Krishna. Are we greater than Lord Brahma? No. Are we greater than Narad Muni? No. Are we greater than Vyasdev? No. Just follow Lord Brahma, that's all. Our Sampradaya, that's why I belong to that Sampradaya, Brahma Sampradaya. So Lord Brahma is our spiritual master. He's telling us what we have to do. Satisfy Krishna. That's all. Now text 29, Shloka number 29. Tataste Bharata ime, Tataste Bhratar ime, Prajanam Patayo Nava, Ayajan Vyaktam Avyaktam, Purusham Susamahitah, Tataste Bhratar ime, Prajanam Patayo Nava, Ayajan Vyaktam Avyaktam, Purusham Susamahitah. Translation. My dear son, therefore, your 9 brothers, who are the masters of living creatures, perform the sacrifice with proper rituals to satisfy both the manifested and non-manifested personalities. Now you see, what is Lord Brahma saying? He's saying, Tataste Bhratara ime. Bhratar means brothers. So Lord Brahma, in the beginning, he produced 10 children. 10 sons of Lord Brahma, and Narad Muni is one of them. It includes Vashishta Rishi, Krati Rishi, Atri Rishi,
Manu. So it includes these 10 sons of Lord Brahma. And every son was entrusted with the duty to create progeny to increase the world population. But Narad Muni, he became a brahmachari sannyasi. He was not interested. But other brothers, they got engaged in increasing the population of the world. That's why they are called here as Prajanam Patayo. You can see on your screen the shloka. Prajanam Patayo Nava. So Narad Muni didn't become Prajapati because he wanted to serve Krishna. So he detached himself. He didn't enter family life. He didn't get married. So Narad Muni is the sannyasi or brahmachari in this world. He's a akhand brahmachari, naishtik, pure brahmachari, pure celibate. In this whole universe, he is the greatest celibate. So Lord Narad Muni did not engage in family. He didn't enter family life. But other 9 brothers of Narad Muni, they entered family life according to the order of Lord Brahma. And that's why they became Prajapatis to increase the world population. Ayajan vyaktam avyaktam purusham susamahitaha. So that you see very important part in the shloka. Some of these personalities, they satisfied, they became personalists. And some of the personalities, they became impersonalists also. You see, that's what he's saying. Ayajana vyaktam avyaktam purusham susamahita. So they all engaged in satisfying avyaktam and vyaktam. So some of them engaged in satisfying vyaktam or the personality of Godhead. And some of them, they got engaged in satisfying the Supreme Brahman as an imperson or his energies. So this is how the 9 brothers of Narad Muni, they engaged themselves. So they all engaged themselves in satisfying Krishna. They also did not engage in satisfying others or human beings or anyone else. No. They also engaged in satisfying Krishna, the Supreme Person. You see. So that is what Lord Brahma is saying. That all the Prajapatis, their only goal is to satisfy Krishna. Lord Brahma's only goal is to satisfy Krishna. Narad Muni, Vasishtha Rishi, Atri Rishi, Bhrigu Rishi, Kratu Rishi, all these are all Prajapatis. So everyone's goal is to satisfy Krishna. Now text 30, shloka number 30. Tatascha mana vahakale ijire rishayo pare pitaro vibudha daitya manushya kratubhir vibhum. Tatascha mana vahakale ijire rishayo pare pitaro vibudha daitya manushya kratubhir vibhum. Translation. Thereafter, by performance of sacrifice meant to please the Supreme Lord, Manu, the father of mankind, worshipped great sages, learned scholars, and forefathers. So, Manu, now, you see, Tatascha Manavah Kale. Manavah. So, Manu is again one of the brothers of Narad Muni. He is one of the sons of Lord Brahma. And he is Ijire Rishayo Apare, whom he worshipped, rishis, saintly people. Pitaro Vibudha Daitya. He worshipped his ancestors and he worshipped other demigods also. Manushya Kratubhir Vibhum. And he is the father of mankind. And he engaged in satisfying Vibhum. Vibhum means Krishna, Supreme. Krishna is called as Vibhu, we are called as Anu. So he engaged in satisfying Vibhum, Krishna.
So Manu also engaged only in satisfying Krishna, not in satisfying human beings. And to satisfy Krishna, what did he do? He worshipped saintly people, forefathers, everyone. But what was the purpose? To satisfy Krishna. So that is why service to humanity can be done by satisfying saints also, by satisfying devotees also. Why? Because devotees are representative of Krishna. Pure devotee of Krishna is a representative of Krishna. So when we serve a pure devotee, actually it is an indirect way of serving Krishna. Because you cannot directly serve Krishna. Right? In this material world, as of now, we cannot directly serve Krishna. So we serve Krishna through our spiritual master, through the pure devotees. So that's what Manu is doing here, who is the father of mankind. Just imagine. He is the father of mankind and he is doing this. So you can like the video, comment on the video. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। सो
प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में यज्ञ के बारे में। नारद ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब वो भगवान के शरीर से प्रकट हुए तो उन्हें भगवान के अन्यत्र कुछ भी पता नहीं था और उन्हें भगवान को तुष्ट करना था, भगवान को सेटिस्फाई करना था। तो उनको यज्ञ करना था। तो यज्ञ की सामग्री उन्हें भगवान से ही मिली। भगवान के ही बनाई हुई सृष्टि से भगवान के लिए यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ के बारे में हमने देखा कि यज्ञ के बहुत सारे उसमें वस्तुएं चाहिए, उसमें बहुत सारे उसके विभिन्न अंग हैं और सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि शुद्ध ब्राह्मण उसको करे। लेकिन हमने देखा कि वास्तविक यज्ञ कलयुग में इसलिए भगवान का नाम लेना है क्योंकि बाकी सारे यज्ञ हम इस युग में करना लोगों के लिए असंभव, लगभग असंभव है। अब आज हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा को 26वें श्लोक से। 26वां श्लोक। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Other necessities include invoking the different names of the demigods by specific hymns and vows of recompense in accordance with the particular scripture for specific purposes by specific processes. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे नारद मुनि से कि और भी जो यज्ञ के सामग्रियां हैं उसमें अलग अलग देवी देवताओं का नाम, उनके प्रति मंत्र और दान दक्षिणा ब्राह्मणों को शास्त्रों के अनुसार और अलग अलग विधियां शास्त्रों के अनुसार हमें करने पड़ते हैं। तो अब आप देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नाम ध्येयानि मंत्राश्च। तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में कि यज्ञ में हमें बहुत सारी सामग्रियां चाहिए, लेकिन यज्ञ का जो सबसे मुख्य यज्ञ की जो सामग्री है वो ये है कि यज्ञ को कर कौन रहा है। क्योंकि यज्ञ करने वाले जो शुद्ध ब्राह्मण है वही यज्ञ कर सकते हैं। तो और यज्ञ का अंततः यज्ञ का मतलब क्या हो, यज्ञ किस लिए किया जाता है, जो हम सब देखते हैं कि पहले तो यज्ञ का मतलब क्या होता है। यज्ञ का मतलब होता है भगवान को तुष्ट करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। और
यज्ञ किस लिए किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नाम ध्येयानि मंत्राश्च, तो अलग अलग देवी देवताओं का नाम लेना पड़ता है, मंत्र बोलने पड़ते हैं, दक्षिणा देनी होती है, व्रत करने पड़ते हैं, देवतानुकमः कल्पः, तो देवता लोगों के नाम भी लेने पड़ते हैं। संकल्प तंत्र में वह संकल्प लेके यज्ञ को किया जाता है, अलग अलग विधियां बताई गई। लेकिन वास्तविक में यज्ञ का लक्ष्य क्या होता है? चलिए आपको दिखाते हैं कि वास्तविक में यज्ञ किस लिए किया जाता है। आप देखिए अपने स्क्रीन पे पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में, यानी 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बता रहे हैं कि यज्ञ का मतलब क्या होता है और यज्ञ किस लिए किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं आप देखिए अपने स्क्रीन पे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि अर्जुन सारे यज्ञ और सारी तपस्या का भोक्तारम, मैं भोगता हूं, उसका भोगने वाला, सारे यज्ञों को भोगने वाला कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो सारे यज्ञ और सारी तपस्या का अंततः लक्ष्य क्या है? सारे यज्ञ और सारी तपस्या किसके लिए बने? तो वो भगवान को तुष्ट करने के लिए बने। कोई भी यज्ञ, कोई भी यज्ञ हो, उसका लक्ष्य एक ही है, भगवान को तुष्ट करना। क्योंकि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। वैसे तो कई यज्ञ किए जाते हैं जो देवी देवताओं को भी तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये सारे देवी देवता है कौन? ये सब भगवान के शरीर के ही अलग अलग भाग हैं। तो जब जब को हम तुष्ट करते हैं तो ये सारे देवी देवता अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। ये तरीका होता है यज्ञ करने कि यज्ञ का जो शिष्टा, यानी यज्ञ का जो प्रसाद होता है, वो देवी देवताओं को दिया जाता है और इससे देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। अगर हम सोचे कि अलग से उनको हम तुष्ट कर देंगे तो वो संभव नहीं है। अलग से आप उनको तुष्ट नहीं कर सकते। यज्ञ का जो वास्तविक भोक्ता होता है किसी भी यज्ञ का, वो भगवान विष्णु होते हैं। और भगवान विष्णु जब तुष्ट हो जाते हैं तो सारे देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। तो किसी भी देवता को आपको तुष्ट करना है तो पहले भगवान विष्णु को तुष्ट कीजिए और फिर उनका जो प्रसाद है वो आप देवी देवता को दे दीजिए, तो वो तुष्ट हो जाएंगे। ये तरीका होता है यज्ञ करने का। तो कोई सोचे कि हम किसी को अलग से तुष्ट कर देंगे तो वो असंभव है। तुष्ट तो आपको भगवान को ही करना है, तभी आप किसी और को भी तुष्ट कर पाएंगे। यज्ञ का जो मार्ग है वो है। लेकिन दुविधा ये है, त्रुटि ये है कि इस समय, जैसा हम सब जानते हैं, ये कलयुग चल रहा है। तो इस समय ये कलयुग का जो समय है, इसमें किसी भी और प्रकार का यज्ञ करना असंभव जैसा है। क्योंकि यज्ञ की सामग्री और यज्ञ का जो करने वाले जो ब्राह्मण है वो मिलते नहीं, शुद्ध ब्राह्मण।
लेकिन भगवान को तो तुष्ट करना है ना। अब ब्राह्मण नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान को तुष्ट करना बंद कर दें। तो इसीलिए कलयुग में जो विधि बताई गई है कि जिससे हम भगवान को बड़े आराम से, बड़ी आसानी से तुष्ट कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। और वो कोई भी किसी भी अवस्था में किसी भी समय कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये साइंस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बस हम कोई नियम पालन कर रहे हैं, नहीं। इसी को कहते हैं भगवत तत्व का विज्ञान। ये पूरा एक साइंस है, ये पूरा विज्ञान है कि कैसे भगवान को तुष्ट करना है, भगवान को तुष्ट करने का मार्ग क्या है। हजारों सालों से ये प्रथा चल रही है भगवान को तुष्ट करने की, यज्ञ करने की। क्योंकि ये जो जड़ विद्या है जो हम पढ़ते हैं किताबों में, अपने स्कूल में, कॉलेजों में, ये हमें किस ओर लेके जाता है? ये हमें लेके जाता है इंद्रिय तृप्ति की ओर, कि किसी भी तरह अपने इंद्रियों को तृप्त कर लो। और हमारा जो वेदों का साहित्य है, जो वेदों का विज्ञान है, जो वेदों का साइंस है, वो किधर लेके जाता है कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करो, है ना। जो आधुनिक विज्ञान हम देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ये वो, गणित, ये सब अलग अलग तरह के का ज्ञान है, ये हमें किधर लेके जा रहा है? हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ये हमें जानवर बना रहा है। क्यों वो ऐसा कहते थे? क्योंकि जानवर जो है, मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? कैसे हम समझेंगे कि ये मनुष्य है, ये जानवर है? अंतर एक ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतम पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो। तो एकमात्र अंतर मनुष्य और जानवर में क्या है? वो है धर्म। और धर्म का मतलब वो क्रियाएं जिससे भगवान तुष्ट होते हैं। यज्ञ की जो क्रिया है उसे धर्म कहते हैं। यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए अगर मनुष्य यज्ञ नहीं कर रहा भगवान को तुष्ट करने के लिए, तो वो जानवर के समान है। क्योंकि जानवर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना जीवन जीते हैं। आप देखिए अभी जो आधुनिक विज्ञान है, ये हमको इंद्रिय तृप्ति के से अन्यत्र और क्या सिखाता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ये सब कसाई घर है। स्कूल और कॉलेज जो है वो कसाई घर है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा को मारा जाता है। मतलब आत्मा तो मर नहीं सकती, आत्मा का पतन होता है यहाँ। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवान की अंश है। आत्मा है तो भगवान की अंश। लेकिन यहाँ पे इन स्कूल कॉलेजों में क्या सिखाया जाता है? शरीर को तृप्त करो, शरीर का इंद्रिय तृप्ति करो, बस। और इससे क्या होता है? हमारा अहंकार बढ़ता है, ईर्ष्या की, क्योंकि हम शारीरिक आयाम पे जीना शुरू कर देते हैं, इंद्रियों के आयाम पे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। तो उससे क्या होता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति मुझे करानी है, और इससे अहंकार बढ़ता है, इससे द्वेष बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ईर्ष्या करता है। ये थोड़ा और बड़े आयाम पे जाते हैं तो एक परिवार दूसरे परिवार से ईर्ष्या करता है। दो परिवार एक दूसरे को देख नहीं सकते, तुलना होती है। और
थोड़ा और ऊपर जाए तो एक समाज दूसरे समाज से ईर्ष्या करता है, एक देश दूसरे देश से ईर्ष्या करता है। और इस ईर्ष्या के चक्कर में हमने क्या किया है, अपने ही विनाश का सामान तैयार कर लिया, एटम बॉम्ब। आप देख रहे हैं, स्वयं स्वयं का विनाश खुद ही करना है। एक एटम बम डाल दो, पूरी सभ्यता खत्म, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिविलाइजेशन। अपना विनाश का सामग्री खुद ही तैयार कर लिया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इंद्रिय तृप्ति का ज्ञान। इस ज्ञान में कोई कोई भी ऐसे आप संस्था नहीं देखेंगे सिवाय कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो भगवान को तुष्ट करने का ज्ञान दे रहा हो। सब ज्ञान एक ही है, पैसा कमा लो, इंद्रिय तृप्ति कर लो, एंजॉय कर लो लाइफ को, मजे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन भगवान भगवत तत्व का ज्ञान कहाँ है? तो ये हमें पूर्णतः पतन की ओर लेके जाता है, पूर्णतः। तो कृष्ण भगवान को तुष्ट करने का कोई ज्ञान ही नहीं दे रहे कोई भी। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है कलयुग में, क्योंकि कलयुग जो है वो सबसे पतित युग है। तो इसमें अब भगवान क्यों अवतरित होते? हमने देखा है भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि उनका अवतार क्यों होता। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पे कि भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि अवतार क्यों लेते हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पे भगवान क्यों अवतार लेते हैं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, क्योंकि धर्म की स्थापना हम और आप तो कर नहीं सकते। तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, यानी हर युग में प्रकट होते हैं। तो इससे पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो द्वापर युग में भगवान किस रूप में आए? स्वयं भगवान कृष्ण आए। अब कलयुग का युग धर्म क्या है? भाई धर्म की स्थापना कौन करेगा? हम और आप तो नहीं कर सकते, धर्म की स्थापना भगवान करेंगे। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का युग धर्म है। तो कौन स्थापित करेगा इसको? भगवान ही तो करेंगे। तो इसलिए कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आज से 500 साल पहले आए थे और उन्होंने हमें एक मार्ग बताया है जिससे हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी मार्ग हम पालन नहीं कर सकते कलयुग में। तो उन्होंने कलयुग का युग धर्म बताया है कि कैसे हम भगवान को तुष्ट करें। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कलयुग में जो भगवान को तुष्ट करने का यज्ञ का मार्ग है वह है हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ। और इस मार्ग से हम भगवान को, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में किसी भी जगह पे भगवान को तुष्ट कर सकता है, क्योंकि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। क्योंकि अगर भगवान तुष्ट है हमारी क्रियाओं से तो पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। अब 27वां श्लोक, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावय वैरेते संभारा संभृता मया।
गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया। ट्रांसलेशन अनुवाद। Thus I had to arrange all the necessary ingredients and paraphernalia of the sacrifice from personal body parts of the personality of Godhead. By invocation of the demigod's name, the ultimate goal Vishnu was gradually attained, and thus compensation and ultimate offering was complete. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस तरह से जो भी यज्ञ सामग्री थी वो सब मुझे उस सब का प्रबंध करना पड़ा, और ये सब भगवान के ही शरीर से निकला, और अंततः इस सब का लक्ष्य था भगवान विष्णु को तुष्ट करना। और इस तरह से हमारी जो यज्ञ है वो हमारा यज्ञ जो है वो पूर्ण हुआ। तो अब आप देखिए, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तम समर्पणम। तो पूर्णतः समर्पण हमने किया भगवान को, सब कुछ भगवान को तुष्ट करने के लिए था, तो हमने भगवान को समर्पण किया सब कुछ। और संभारा समृता मया, लक्ष्य भगवान को तुष्ट करना था। तो आप देखिए अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब कुछ पुरुषावयवय रहते, कि जो भी हमें यज्ञ की सामग्री थी वो भगवान के शरीर से ही प्रकट हुआ, भगवान से ही मिला। जैसे हमने उदाहरण देखा था अपने पिछले सत्र में कि अगर गंगा माता की जो पूजा करते हैं वो गंगा माता से ही जल को लेते हैं और गंगा माता में ही विसर्जित कर देते हैं, है कि नहीं? उसी तरह पूजा किसकी कर रहे हैं? गंगा माता की, उन्हीं का जल और उन्हीं की पूजा। उसी प्रकार सब कुछ तो भगवान विष्णु से ही निकला है। जैसा हमने अपने पिछले सत्रों में भी चर्चा किया कि भगवान विष्णु और वास्तविक विष्णु कौन है? वो है कृष्णा। तो जो ये हमने देखा है किस तरह से सृष्टि की रचना हुई है। तो भगवान के शरीर, कृष्ण भगवान के शरीर से जो ब्रह्म निकलता है, जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के कारण क्या बनता है? भौतिक आकाश, ये जो हम जड़ जगत का आकाश देखते हैं। फिर इस आकाश से हम सबने देखा था कि किस तरह से अलग अलग सृष्टि के कारण प्रकट होते हैं। आकाश से वायु बनता है, फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और यही हमारे शरीर और पूरी सृष्टि के यही पंचभूत से सब कुछ बना हुआ है। यही 5 पंचभूत से सब कुछ का सृजन हुआ। तो इसलिए जो कुछ भी सृष्टि में है वो सब भगवान के लिए ही प्रयोग करना है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमने यही किया, सब कुछ भगवान की शक्ति है और भगवान के लिए ही प्रयोग करना है। ये हम सब ने किया भगवान को तुष्ट करने के लिए। अब 28वां श्लोक। इति संभृत संभारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुष यज्ञम् तेनैवायजमीश्वरम्। इति संभृत संभारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञम् तेनैवायजमीश्वरम्। ट्रांसलेशन अनुवाद।
Thus I created the ingredients and paraphernalia for offering sacrifice out of the parts and parcels of the body of the Supreme Lord, the enjoyer of the sacrifice, and I performed the sacrifice to satisfy the Lord. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि से कि इस तरह से मैंने यज्ञ सामग्री अर्जित की भगवान के ही शरीर से, और भगवान के ही शरीर के अंगों से ये सब प्रकट हुई, और भगवान पुरुष है, सारे यज्ञों के वो भोक्ता है, और मैंने ये यज्ञ किया भगवान को तुष्ट करने के लिए। अब आप देखिए ब्रह्मा जी किसको तुष्ट कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं ना, लोग सोचते हैं कि हम मनुष्यों को तुष्ट कर लें, दुनिया को तुष्ट कर लें, संसार को तुष्ट कर लें। ब्रह्मा जी ये सब नहीं सोच रहे। ब्रह्मा जी को पता है कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। वो किसी मनुष्य को तुष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो किसको तुष्ट करने की बात कर रहे हैं? कृष्णा को। क्योंकि उन्हें पता है कि वो तुष्ट है तो पूरा जगत, पूरी सृष्टि तुष्ट है। हमें अलग से किसी को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने ये सारी यज्ञ सामग्री तैयार की, और ब्रह्मा जी तुष्ट किसको करना चाह रहे हैं? कृष्णा को। ठीक है, तो भगवान को तुष्ट करने से ही पूरा जगत तुष्ट होगा। हम सब चाहते तो हैं कि इस दुनिया को हम अच्छी बनाएं, लेकिन अच्छी हम नहीं बना सकते, वो भगवान बनाएंगे। जो आजकल चल रहा है कि नर नारायण सेवा, नर की सेवा करना, मनुष्यों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया बद से बदतर होती जा रही है। अगर हमें सृष्टि को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, लोगों के जीने के लायक बनाना है, तो एकमात्र मार्ग है भगवान को तुष्ट करना। क्योंकि लोगों को लगता है गरीबी है, भूखमरी है, ये है, वो है। इसका कारण क्या है कि भगवान को तुष्ट नहीं किया है? उसका कारण ये है। तो कारण लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए लोग गलत जगह पे अपनी सेवा को लगाते हैं, गलत जगह पे तुष्टिकरण करते हैं। तुष्टिकरण भगवान का होना है, और किसी का तुष्टिकरण करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। वो व्यर्थ समय, वो व्यर्थ गंवाने जैसा मार्ग है। 29वां श्लोक। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिताः। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिताः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। My dear son, thereafter your 9 brothers who are masters of living creatures perform the sacrifice with proper rituals to satisfy both the manifested and non-manifested personalities. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो हे मेरे पुत्र नारद मुनि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो उसके बाद तुम्हारे 9 पुत्र जो सभी जीवों के प्रजापति हैं, उन्होंने यज्ञ किए अलग अलग विधियों से भगवान को और भगवान की शक्ति को तुष्ट करने के लिए। अब आप देखिए, तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं जो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। वैसे तो उनके बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन जब ये वार्तालाप चल रहा है तो इस समय ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। और ये 10 पुत्र जो हैं, ये इसमें से नारद मुनि तो ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए। वो कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए, तो वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं।
लेकिन बाकी जो 9 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, वो गृहस्थ बने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि तुम्हें सृष्टि की जनसंख्या बढ़ानी। तो क्योंकि वही सारे जीवों के वही लोग वास्तविक पिता हैं, क्योंकि उन्हीं 10 जो पुत्र थे उसमें से 9 पुत्रों को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति मतलब क्योंकि वो लोग गृहस्थ बने, क्योंकि उन्हें इस सृष्टि की जनसंख्या बढ़ानी थी। तो हम सब उन्हीं से आए हैं, उन्हीं 9 से आए हैं। तो इसलिए आ, उन्हें प्रजापति यहाँ पे कह रहे हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पे, ततस्ते भ्रातर इमे। भ्रातर का मतलब तुम्हारे भाई, हे नारद तुम्हारे भाई, प्रजानाम पतयो, वो सब प्रजापति हैं। और नव, नव मतलब ये तुम्हारे जो 9 भाई हैं ये प्रजापति हैं। अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। तो इन सब ने भी क्या किया, भगवान को तुष्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये जो तुम्हारे भाई लोग हैं वो भी किसी और को तुष्ट करना चाह रहे, नहीं, इन सब ने एक ही काम किया, भगवान को तुष्ट करने का। तो भगवान को तुष्ट करने का जो मार्ग है वही अपनाया इन सब ने, तुम्हारे सारे भाइयों ने। ऐसा ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रजापति भी किसको तुष्ट करना चाह रहे हैं, कृष्णा को, किसी और को नहीं। अब ये भी हम देख रहे हैं कि इसमें अव्यक्तम व्यक्तम 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब कि कुछ जो उसमें से थे वो वैष्णव बने, शुद्ध भक्त बने, और कुछ उसमें से जो थे वो अव्यक्त, यानी भगवान के अव्यक्त रूप की पूजा जो लोग करते हैं वो किया। लेकिन अंततः सबका लक्ष्य क्या था, भगवान को तुष्ट करना। तो वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। 30वां श्लोक, ततश्च मन वह काले ईजिरम ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्य क्रतुभिर्विभुम। ततश्च मन वह काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्य क्रतुभिर्विभुम। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Thereafter, by performance of sacrifice meant to please the Supreme Lord, Manu, the father of mankind, worshipped great sages, learned scholars, and forefathers. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। नारद मुनि से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसके बाद भगवान को तुष्ट करने के लिए मनु, जो सारे मनुष्यों के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने ऋषि मुनियों, साधु संतों और महान अपने महान ज्ञाता और अपने पितरों की पूजा की। अब आप देखिए, अब मनु के बारे में कह रहे हैं, तो वो भी 9 ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक है। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ततश्च मनवः काले, मनु जिनके कारण हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के वंशज हैं। तो कह रहे हैं ईजिरे ऋषियों पर है, तो उन्होंने ऋषियों की पूजा की, शुद्ध भक्तों की पूजा की, पितरों की पूजा की। लेकिन इस सब पूजा के पीछे लक्ष्य क्या था, भगवान को तुष्ट करना। तो भगवान को हम डायरेक्टली या सीधे तरीके से तुष्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान से हमारा अभी संपर्क स्थापित नहीं है। इसीलिए हम भगवान को तुष्ट करने के लिए साधु संतों को तुष्ट करते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान को जो हम अपना भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो शुद्ध भक्तों से होके जाता है। इसीलिए, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं इस सृष्टि में, गुरु जो होते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो जब हम भगवान को तुष्ट करना होता है तो हम साधु संतों के माध्यम से तुष्ट करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं
उनकी सेवा करते हैं, उससे हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को तुष्ट करते हैं, जो मनु ने यहाँ पे मार्ग अपनाया। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आज यहाँ पे हम अपने सत्र को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।